Welcome back everyone for the inaugural session of this two-day national workshop on health sector disaster preparedness and response and fire safety in healthcare facilities being organized by the Disaster Management Cell of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. It is my proud privilege to invite our Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Shri Jagat Prakash Nadda ji, to preside over this august gathering. I take this opportunity to invite Additional Secretary Ma'am to please formally welcome all the dignitaries and delegates. Honorable Union Minister Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Shri J.P. Nadda sir, Honorable Member and Head of the Department, National Disaster Management Authority, Shri Rajendra Singh sir, respected Secretary, Health and Family Welfare, Ms. Punya Salila Srivastava Madam, and Director General Health Services, Dr. Sunita Sharma ji, Director AIMS, and all the dignitaries and delegates at this national workshop on health sector disaster preparedness and response. A very good afternoon to all of you. I take this opportunity to extend a very warm welcome and express my gratitude to the Honorable Union Minister, Health and Family Welfare, sir, for taking time out of his busy schedule to come and bless this workshop and provide his kind guidance. I would like to extend a warm welcome also to the Honorable Member, MDMA, Shri Rajendra Singh sir, and our Secretary, Health and Family Welfare, Madam Punya Salila Srivastava, Director General Health Services, and all the eminent dignitaries here who are with us and this very important workshop to provide the valuable guidance. On behalf of the Ministry of Health and Family Welfare, I would like to also welcome all the members of this very distinguished group representing various institutions and representing healthcare in various states and union territories. We are all here to deliberate and hone our skills and to build a roadmap for building a disaster resilient and responsive nation. We, under the National Disaster Management Program, the country's NDMA, they provide nodal pinpoints, and we have been having very active collaboration under the Health Ministry and NDMA for different aspects of disaster management. We have been in partnership, and this is the second such national workshop, and I'm sure that all the deliberations here would very much forward the cause of a disaster resilient nation. Under the ministry also, we have taken forward a lot of training programs, and a lot of registries are being built up for not only disaster but also other CBRN related disasters in hospital administration and management and patient care. So we are also building up infrastructure development, but overall capacity building is the most important, and therefore this kind of workshop is of great sense very much important. I welcome all of you once again to this workshop, and honorable dignitaries for gracing this occasion, and extend my best wishes to all. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your inspiring words. I would like to request our Director General Health Services, ma'am, to please address the gathering. मंच पर बैठे माननीय अतिथिगण, ऑनरेबल श्री J.P. Nadda जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ सेक्रेटरी एंड डॉक्टर राजेंद्र सिंह, अन्य अतिथिगण जो सभागार में उपस्थित हैं, आप सबको इस वर्कशॉप में, इस कार्यशाला में आमंत्रित किया है। और जो हम लोग फेस करते हैं
वहाँ पे और लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो हमको मतलब एक डिजास्टर एक बार नहीं करना होता है, हमको परपेचुअली इसको हमको आगे बढ़ाना होता है और इसको क्वालिटी को, इसके SOP, इसके प्रोसीजर्स को मेंटेन करना होता है। मैं आप सबको बहुत स्वागत करती हूँ इसमें और उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यशाला से आपको काफ़ी ज़्यादा शिक्षा इसमें मिलेगी और आप अपने राज्यों में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you, ma'am, for your insightful words. It gives me great pleasure to invite Secretary, Union Ministry, Health and Family Welfare, whose constant guidance and unwavering support has been an important inspiration to all of us, to grace the audience with the sage words. Ma'am, please. So, Honorable Union Health Minister, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Rajendra Singh ji, Member NDMA, Dr. Sunita Sharma, Ms. Johnson, Director AIMS, Director NCDC, representatives of various states and central government institutions and various organizations and other stakeholders from national and international organizations. A warm welcome to all of you to this second national workshop on health sector preparedness and response. I'm very happy that all of you are here and together we are reinforcing our efforts for strengthening and building resilient health systems. At the time of a disaster or any kind of incident, health facilities are the harbinger of hope for all those who have been affected by the disaster or by the incident. Therefore, disaster management, especially in the context of hospital disaster management, becomes very, very important. And as Director, as DGC, as DGHS said, that preparedness is the core element of ensuring that we meet each and every incident in a way that in an effective manner. And there are several state governments here who have done an exemplary job, whether it be flood, whether it will be cyclone, but we have to give the same level of importance to our health facilities, and therefore we thought that considering the onset of summer and even otherwise we should focus on fire safety in health facilities. Under the guidance of Honorable Health Minister, we have been consistently writing to you and reviewing the fire safety preparedness in all the states, UTs and the central government institutions. And at the initiative of SIR, we decided to make it a core area of this particular workshop. We keep on doing a wide variety of capacity building programs for healthcare workers and hospital disaster and for hospital disaster management. But it's very important to do this continuously, and therefore I'm happy that the module is here. The first version is before you. Please give your feedback. We'll try and improve it further and make it more engaging. But I'm very happy to note that all of you have come forward and most of you are the cutting edge people. It is very important because you can make the difference between a thing happening and a thing not happening. So your role is very important. We wrote to states to do fire safety audits. All of you have come forward, and we have also created, I'm thankful to NCDC, have created on the IDSP portal a tab whereby you can share your best practices, you can share your efforts with us. As all of you know, 95% of the burn injuries are preventable, which means that if we can take off heat, fuel and oxygen, I'm talking in the context of hospitals, we can certainly make a difference. A hospital is a very vulnerable place. कहीं और कुछ होता है हम भाग सकते हैं. Our patients can't run. So that's why we have to be especially prepared, because even that small spark, and sometimes it's not a big thing that is required. It's a simple measure, a simple precaution, simple checklist, small steps that can make a difference. So I'm sure that with your presence here, we can hope for a safer health facilities throughout the country. I congratulate all our partners, all the states and UTs who are working collaborative with us, and I look forward to a safer country as a whole. All the best. Thank you, ma'am, for your words of encouragement. May I now request our special guest, member and HOD, National Disaster Management Authority, to enlighten all the delegates on this vital topic of disaster preparedness and response.
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, मंच पर विराजमान सम्मान्य अतिथिगण, सभी राज्य आपदा नोडल अधिकारीगण, प्रतिष्ठित प्रतिभागी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारीगण, सहयोगीगण एवं मित्रों, आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए एक अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए कि अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर को एक मंच पर लाने का एक सशक्त प्रयास है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपदाओं का स्वरूप दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। बदलती जलवायु के संदर्भ में आपदाएं अब केवल जोखिम पर सीमित नहीं रही हैं, बल्कि अनिश्चितताएं बन गई हैं और हमारी तैयारियों को चुनौती देती हैं। इस जटिलता को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियां, उभरते जैविक खतरे और अस्पतालों में होने वाली आकस्मिक घटनाएं जैसे आगजनी की घटनाएं और भी गंभीर बना देती हैं, चाहे वे किसी भी आपदा से जुड़ी हो या नहीं। हाल ही में देश के कई बड़े अस्पतालों में आग की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अग्नि सुरक्षा अब केवल एक तकनीकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन रक्षा से जुड़ा एक नैतिक और संस्थागत उत्तरदायित्व बन चुका है। कोविड-19 की महामारी ने हमें यह मूलभूत सत्य सिखाया है। स्वयं स्वास्थ्य प्रणालियां भी आपातकालीन स्थितियों में जोखिम में आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी समाज की आपदा सहनशीलता का मूल आधार उसकी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती बनाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र की आपदा पूर्व तैयारियां केवल आधारभूत संरचना बनाने और संसाधनों का भंडार तक सीमित नहीं है। यह केवल कुशल पेशेवर नेटवर्क के निर्माण, क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन और ऐसे संस्थागत प्रणालियों को स्थापित करने का कार्य है जो किसी भी आपदा या अग्निकांड की स्थिति में शीघ्र और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। मैं आज के लिए आप सभी के सामने 3 बिंदु रखना चाहता हूं। नंबर 1, स्वास्थ्य प्रणाली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मुख्य धारा में आप लेके आए। हमें केवल आपदा प्रतिक्रिया तक, रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस और रिकवरी को भी स्वास्थ्य प्रणाली की योजना में डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में समाहित करना है। इसमें अग्नि सुरक्षा को भी एक अनिवार्य घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। अस्पताल भवनों में फायर ऑडिट को नियमितता, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता, निकासी मार्गों की स्पष्टता और आपातकालीन बिजली की आपूर्ति की सुदृढ़ता, इस सभी पहलुओं को डिजाइन स्तर पर ही सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यबल में आवश्यक क्षमताओं का निर्माण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अस्पताल प्रबंधन से लेकर के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं तक सभी को प्रशिक्षित और सशक्त करना है। उदाहरण के लिए जब स्वयं अस्पताल की संरचना आपदा या अग्निकांड से प्रभावित हो, उस स्थिति में अस्पताल प्रबंधन किस प्रकार अपने स्टाफ को मार्गदर्शन देंगे कि बढ़े हुए रोगी भार को कैसे संभालें। क्या हमारे अस्पताल स्टाफ को यह पता है कि आग लगने से पर क्या करना है? क्या नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और टेक्निकल स्टाफ अग्नि सुरक्षा अभ्यास से नियमित रूप से शामिल किया जा रहा है उनको कि नहीं? इन सवालों के जवाब तय करते हैं हमारी व्यवस्था जीवन की रक्षा कर सकती है या नहीं। यही आपदा प्रतिक्रियाएं व्यवहारिक हैं या नहीं, यह परखने के लिए नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण और टाइम मोशन स्टडी जैसे नवाचारों को अपनाना होगा। नंबर 3, समन्वय और साझेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना। मानव स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, अग्नि सेवा एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों एवं समन्वित नेतृत्व, संवाद और सहयोग की संस्कृति को
स्थापित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक आपदा प्रतिकारक और सुदृढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन गया है। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस समायोजित एवं व्यापक विषय वस्तु को संगत करने हेतु बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसमें आपदा को तैयारी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि स्वच्छता पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। एनडीए में इस दिशा में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर के इस सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक आपदा सहिष्णु भारत का निर्माण करें। जय हिंद। थैंक यू। Thank you, sir, for your thought-provoking words. Ladies and gentlemen, this workshop was conceptualized as a next step in a series of endeavors which are being undertaken as a part of Union Ministry of Health's nationwide campaign for raising awareness about hospital fire safety across all states and union territories. A major achievement of this campaign was the Fire Safety Week, which was successfully celebrated from the 21st to 26th April 2025. Some of the glimpses from the activities undertaken across the country during the Fire Safety Week are being now displayed on your screens.
On this momentous occasion, we are extremely proud to share with you all the iGOT course on fire safety in healthcare facilities. This online course has been prepared in consultation with experts who were pulled in from AIIMS New Delhi, the Central Design Bureau of the Ministry, Disaster Management Cell, and technical assistance from the National Institute of Health and Family Welfare. The course, through its multiple modules, offers a comprehensive understanding of fire safety which has been tailored to healthcare facilities. It explores the unique vulnerabilities of these facilities and provides essential knowledge on the various causes of hospital fires as well as strategies for fire prevention, detection, alarm and suppression. It elaborates on the different types of fire extinguishers, their appropriate uses and safety guidelines. The course also lists out the actions to be taken in the event of a fire accident. It addresses the regulatory and operational issues for preventing and mitigating risk of fire accidents. And finally, it covers practical aspects which include successfully planning and executing fire drills and capacity building to ensure a proactive and responsive fire safety culture. May I now request our Honorable Union Minister, Sir, to officially launch the iGOT course on fire safety in healthcare facilities. The course will now go live after Sir is now inaugurated. Can we have it? Thank you, sir, for doing the honors. I would like to request our distinguished chief guest, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, to kindly deliver the keynote address and help guide us all on the future course of action. Madam Punya Salila Srivastava, Secretary, Department of Health and Family Welfare, Shri Jagat Prakash Nadda, the Member National Disaster Management Authority, Madam Changson, the Additional Secretary, Department of Health and Family Welfare, Dr. Sunita Sharma, Director General of Health Services, distinguished guests, my partners who are participating in this program, friends from the electronic media and print media, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को दूसरी सेकंड नेशनल वर्कशॉप फॉर द हेल्थ सेक्टर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस एंड फायर सेफ्टी ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज को जो उन्होंने आयोजित किया है, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वर्कशॉप. First of all, I would like to congratulate the Secretary and her team for organizing this workshop. And I would also like to thank, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से इसमें अपने इनपुट्स देकर इस वर्कशॉप को कंटेंट से एक तरीके से उसको कंटेंट के दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है. इसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूँ. ये जो नेशनल वर्कशॉप है, ये
स्टेट्स और यूटीज के कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को जहाँ मैं संबोधित कर रहा हूँ वहीं मुझे बताया गया कि दूसरे हॉल में लोग स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो भी सम्मिलित हुए हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ा है और इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि बता रहे हैं कि ये सेकंड वर्कशॉप है। ये सेकंड वर्कशॉप अपने आप में बताता है कि स्वास्थ्य विभाग भी किस तरीके से धीरे धीरे डिजास्टर के प्रति अपने आप को प्रिपेयरनेस की तरफ आगे बढ़ा रहा है। पहले हम सर्कुलर निकाल दिया करते थे, गर्मी आती थी तो उससे पहले हम एक बार थोड़ा ऑडिट कर लेते थे, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इससे कहीं और आगे बढ़ने की जरूरत है और हमको इससे और ज़्यादा गहराई में जा करके अपने हेल्थ वर्कर्स, अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, अपने हेल्थ के साथ जुड़े हुए लोगों को और सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये वर्कशॉप इस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रयास किया गया। हमारी कोशिश है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ रेजिलिएंट भी हों और रेजिस्टेंट भी हों, और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि हम ऐसे समय समय पर इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, हेल्थ प्रिपेयरनेस के तहत इस कार्यक्रम को लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अनइंटरप्टेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो और हम क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकें। और ये तीनों बातें तब हो संभव है जब हम प्रिवेंटिव पार्ट पर अत्यधिक ध्यान दें, क्योंकि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए तो हमारी कंटिन्यूस रेगुलर ट्रेनिंग चलती ही है। हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तो काम करते ही हैं, हम अनइंटरप्टेड काम तो करते ही हैं, 24/7/365 काम करते हैं, लेकिन इसके बीच में कोई तकलीफ ना आए और जो अनफोर्सीन सिचुएशंस आती हैं उसके प्रति हम सजग रहें और उसको हम मिटिगेट कर सकें, उसको हम एड्रेस कर सकें। इस बात के लिए ये जो वर्कशॉप रखी गई है वो हम उसके लिए बधाई भी देते हैं और इसको सेंसिटाइज करने के लिए आप जो आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट जब ये वर्कशॉप कर रहा है तो ये सिर्फ कोई हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए नहीं कर रहा है, ये पूरी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कर रहा है। फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, नर्सिंग होम्स हों, पॉलीक्लिनिक्स हों, मैटरनिटी सेंटर्स हों और हमारी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। हमारा ये ट्रेनिंग का पार्ट सिर्फ हॉस्पिटल्स तक रुक ना जाए। दिस हैज़ टू बी एक्सपैंडेड फर्दर। और एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें हॉस्पिटल्स के साथ साथ नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक्स, हमारे मैटरनिटी सेंटर्स, हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हमारे बहुत से प्रिवेंटिव फैसिलिटीज़ जो हैं उन सबको हम कवर कर सकें, इसकी हमको चिंता करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में आप इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से आगे बढ़ाएंगे। हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सबसे पहले तो हम हाई लोड इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी बहुत होता है। ऑक्सीजन जहाँ जान देने के लिए होता है, जान को बचाने के लिए होता है, वहीं वह इन्फ्लेमेबल भी होता है। उसी तरीके से अन्य गैसेस भी होते हैं। हमारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, हैंड सैनिटाइजर प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों के प्रति सेंसिटिविटी के साथ, और इसके सब प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी बन सकती है कि हम डिजास्टर होने की कभी स्थिति न लाएं। प्रिवेंटेबल डूज एंड डोंट्स इतने स्ट्रॉन्ग
सेंसिटिविटी होनी चाहिए और हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अगर हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को इससे हम बच सकते हैं। इसलिए और जैसा कि मैडम सेक्रेटरी ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल्स में प्रेग्नेंट वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड पर्सनस हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स पर बेड पर लेटे हुए हमारे पेशेंट्स हैं। तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अवर शोल्डर्स, and it is not only on the shoulder of the director of the institution, it is not only on the shoulder of the medical superintendent of the hospital, or not only to the caretaker of a nursing home. It is on the shoulders of the grassroots level workers also and the paramedics also. Everybody has to be sensitized. और इसके लिए dissemination of information, training और ट्रेनिंग को उनकी माइन्यूट डिटेल्स, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल टू मिटिगेट और टू फाइट और टू एड्रेस द इश्यूज सिर्फ थ्योरी से नहीं आता, यू हैव टू हैव द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो। और इसलिए मैं चाहूँगा कि ये वर्कशॉप नेशनल लेवल पर ही न रखें, द स्टेट्स यूनिटीज शुड अंडरटेक and they should not only involve the government hospitals, along with government hospitals, all private hospitals, all private nursing homes, सबके साथ उसको मिटिगेट, उसको शेयर करना, उनको वर्कशॉप का पार्ट एंड पार्सल बनाना और उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में आगे बढ़ाना, ये हमारी आवश्यकता होगी। इस तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। हम यहाँ एक बात और भी निवेदन करना चाहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमारा रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स होना चाहिए। मैं शुरू में जब 1998 में पहली बार हेल्थ मिनिस्टर बना और जब मैंने इंस्टीट्यूशंस को विजिट करना शुरू किया तो मैं घबरा गया। मैं घबरा इसलिए गया क्योंकि उस समय जब मैंने देखा कि सेंसिटिविटी लेवल कितनी पुअर है, मैं यहाँ ओपनली नहीं बता सकता कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, लेकिन निश्चित रूप से उस समय से लेकर आज तक हम लोगों ने एक लंबी यात्रा की है। वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे, बट स्टिल वी हैव टू गो फर्दर। और इसलिए हम सब लोगों को इन सारी बातों में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेंसिटिविटी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं होती है तो कॉम्प्लेसेंसी आती है, कॉम्प्लेसेंसी आती है तो एक तरीके से केयरलेसनेस आती है, और केयरलेसनेस फायर का स्पार्क है, और स्पार्क अपने आप में डिजास्टरस होता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वेरी वेरी क्लियर बट हमारी सेंसिटिविटी इन बातों पर कितनी रहनी चाहिए। दिन रात हम मेहनत करते हैं, दिन रात हम पेशेंट्स की केयर करते हैं, लेकिन ये साइड हमारा फोकस में रहे। ये वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? टू ब्रिंग दिस इनटू द फोकस। हम सब लोग इतने इन्वॉल्व हैं 24/7 इन द पेशेंट केयर, लेकिन पेशेंट केयर का ये बहुत बड़ा आयाम है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच हैज टू बी एड्रेस्ड, और इसलिए सेफ्टी ऑडिट्स रेगुलरली होते रहना चाहिए और उसको हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने सारे देश में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया है, और फायर सेफ्टी वीक में इन सारी चीज़ों की चिंता की गई है, और आगे इस वर्कशॉप के माध्यम से इसका अनफोल्डमेंट हो रहा है। हम चाहेंगे कि स्टेट्स, जैसा मैंने पहले कहा, कि स्टेट्स भी अपने प्रोग्राम में इसको मई महीने के अंदर ही नीचे डिसेमिनेट करें और अपने अपने स्टेट के वर्कशॉप्स करें, अवेयरनेस लाएं, प्रिपेयर्डनेस की तैयारी करें, कंप्लायंस ऑफ द सेफ्टी नॉर्म्स इसको पूरा करें। इसकी आवश्यकता होगी, ऐसा मुझे लगता है। और स्टेट्स अपनी तरफ से कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फायर सेफ्टी वीक्स बनाएं और फायर सेफ्टी की दृष्टि से उनकी ड्रिल्स कराएं, उनकी मॉक ड्रिल्स कराएं, उनकी ट्रेनिंग कराएं, इसकी ज़रूरत होगी।
with the states also and the union territories who have done a very good job, and they are going to be facilitated today, I am told. तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ. लेकिन जिन लोगों को पुरस्कृत होंगे उनको भी बधाई, लेकिन जो पुरस्कृत नहीं होंगे उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी अपने आप को सक्षम बनाइए और पूरी ताकत के साथ इस काम को आगे बढ़ाइए. ऐसा मैं चाहूँगा कि हम इसको ऑडिट्स को हम 100% कंप्लायंसेस को हम आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा. एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जो हमारा गवर्नमेंट का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है iGOT, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं जो प्रिवेंशन के बारे में, प्रिपेयर्डनेस के बारे में और रिस्क को मिटिगेट करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है. मैं चाहूँगा कि हमारे हर हेल्थ वर्कर, हर हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति इसका उपयोग करें, इन मॉडल्स का, और इस ट्रेनिंग में जो सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसमें प्लान फॉर पेशेंट इवैक्यूएशन से लेकर के मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ों को की ट्रेनिंग हम iGOT से ले सकते हैं. तो उसका भी हमको सदुपयोग करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को इसको मॉनिटर करना चाहिए कि कितने हेल्थ वर्कर्स ने iGOT की ट्रेनिंग ले ली है, और उसका भी डिजिटाइजेशन करके हमको एटलीस्ट एवरी हेल्थ वर्कर एक इसकी ट्रेनिंग iGOT पर जो मिलती है उसको हमको पूरा करना चाहिए, सो दैट वी आर फुल्ली ट्रेन्ड, फुल्ली ट्यून्ड विद इट. क्योंकि एक अकेले से कुछ नहीं होता, सभी लोग एक साथ इस पर फोकस करेंगे तो उसका लाभ मिल सकता है. और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम बदलाव ला सकते हैं, बदलाव लाया जा सकता है, हम 100% इसको एड्रेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम टाइमली एक्ट करें. और टाइमली एक्ट करने का जो हमारे माध्यम है वो यहाँ बैठे लोग हैं. आप सब लोग ट्रेनिंग पर जोर देंगे, आप सब लोग प्रिपेयर्डनेस पर जोर देंगे, आप सब लोग मॉक ड्रिल्स को ध्यान में लेंगे, आप सब लोग सभी को नीचे तक इसकी ट्रेनिंग डिजिटली कराएंगे, iGOT का उपयोग करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, तो निश्चित रूप से हेल्थ सेक्टर एज ए होल विल बी ready, prepared to fight against all such odds and disasters. तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें लीड लिया है और हम इसको आगे बढ़ाएं. और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से राजेंद्र सिंह जी का सहयोग है, वह सहयोग हमें सदा मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है. और हमको हमेशा एक साथ हैंड इन हैंड आगे बढ़ना है और देश के स्वास्थ्य और अस्वस्थ लोगों की चिंता करनी है. उसमें ये एक आयाम, ये एक एस्पेक्ट हैज टू बी एड्रेस्ड, एंड आई फील दैट सामने बैठे लोगों में वो जज्बा भी है, वो इच्छा भी है, वो विलिंगनेस भी है, वो इच्छा शक्ति भी है. तो आप सब जरूर इसमें सफल होंगे और हम हेल्थ केयर जो हमारा रेजिलियंट रोबस्ट सिस्टम है उसको और हम रेजिलियंट बना सकेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir, for such words of wisdom, and we promise that we will endeavor to keep up with your expectations. Thank you. I now invite our Deputy Director General Disaster Management Cell, Ministry of Health, to propose the vote of thanks. Good evening all. Respected Honorable Union Minister of Health and Family Welfare Sir, Member and Head NDMS Sir, Union Secretary Ma'am, DGHS Ma'am, AS Ma'am, respected seniors, colleagues and friends. It's a proud privilege to deliver the vote of thanks on behalf of Ministry of Health and Family Welfare, Disaster Management Cell. I would like to specially thank our Honorable HFM Sir who has agreed to preside over this particular event. That shows her keenness
And really thanks, sir, for your blessings and your words. We are hope and we will take care of it. Our special thanks to Secretary Ma'am and Additional Secretary Ma'am for guiding us and motivating us to move forward. For the guidance from her has helped us to move throughout this country, and everybody had participated. Thank you, ma'am. The activities of the Fire Safety Week were not possible without the support and cooperation and coordination from the Directorate of Fire Services, Delhi Fire Services, the State Fire Services, because we at one end is just half of the story. The fire services through their prudence and through their trainings could just complete the other half. Thanks to each of them. The state disaster nodal officers and the colleagues from the central government institutions, including All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, to name a few. So these have all contributed to this culminating event. This highlights the need for a well-collective aspirations to build our health facilities that are safe and continue to deliver uninterrupted quality of care to all citizens of this country. Honorable Prime Minister Sir has repeatedly stressed on the need to ensure a regular fire and electrical safety audits in hospital and other public places, and such activities should be made on regular practice and habit in the hospital management. Last, I would like to thank my team from the Disaster Management Cell and colleagues and seniors at the Ministry, the press covering the event, and the administrative support of Dr. Ambedkar International Centre. With the blessings of Honorable HFM Sir and guidance provided by Secretary Ma'am and other dignitaries, I am sure we will be able to come up with the key recommendations of strengthening the health sector disaster preparedness and response with key focus on the hospital preparedness. And thank you once again. Jai Hind. And yes, everybody please stand up for the national anthem. I would request everyone to please be seated for the felicitation event.